बच्चों हम पढ़ रहे हैं कि कौन से वाले इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन इकोनॉमिक फैक्टर्स को पढ़ते पढ़ते हमने इन्फ्लेशन पढ़ ली, इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ ली, और अब हम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को कहते हैं व्हेन वर्किंग पॉपुलेशन कैन नॉट फाइंड जॉब्स। वर्किंग पॉपुलेशन होती है विलिंग और कैपेबल पॉपुलेशन, वो लोग जो इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं जॉब्स में, उनको हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। तो सारी पॉपुलेशन से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं निकलती, बल्कि वर्किंग पॉपुलेशन से निकलती है। व्हेन वर्किंग पॉपुलेशन कैन नॉट फाइंड जॉब्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अच्छा, अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये इसकी बहुत सी रीजंस, वैसे तो इकोनॉमिक्स के बच्चे पढ़ते हैं बहुत, हम तीन मेजर रीजंस पढ़ेंगे और उन्हीं में कुछ डिटेल्स पे बात करेंगे। एक है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, उससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला भी है, उसे भी देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड divided by working population times 100। तो यहाँ से हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा ओके, अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के मुतालिक। इसमें हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की वाली बात पढ़ते हुए तो कुछ बात भी की थी। Cyclical unemployment is a situation that results with because of the low demands of goods and services in the economy, for example during the time of slow economic growth or during the time of recession. The because of the low demand in market, so it results in the slow, because of the slow economic growth or because of the recession. So we remember we made a डायग्राम अबाउट दैट। हमने कहा कि ये किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक साइकिल होता है, ये उस पे बूम का टाइम पीरियड है और ये उस पे स्लम्प का टाइम पीरियड है, ये उस पे रिसेशन का टाइम पीरियड है। तो जब भी किसी कंट्री में रिसेशन होती है, स्लम्प होती है, तो लॉट ऑफ पीपल गेट अनएम्प्लॉयड। इसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड्स कंट्रीज पे आती रहती है, और जब भी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आती है लॉट्स ऑफ पीपल गेट अनएम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी। लेकिन इसका इंडस्ट्रीज पे बैड इफेक्ट इसलिए आएगा कि अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो एक तरफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, दूसरी तरफ लोअर डिमांड की वजह से अगर वो चीजें बनाएंगे भी तो बिकेगी नहीं। दूसरी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। Structural unemployment is a situation that is a result of decline of some specific industries, जिसकी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट जॉब लॉस हो जाता है और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल हम ये देखें कि अगर पेपर इंडस्ट्री में डाउनफॉल आ जाए और उसकी वजह से पेपरलेस हम इकोनॉमी की तरफ मूव करना शुरू हो जाएं, तो यू विल सी के बहुत से लोग जो पेपर्स के साथ एसोसिएटेड है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो या आईटी की वजह से बहुत से सेक्टर्स ऐसे होंगे जिसमें इंडस्ट्रीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सी इंडस्ट्रीज को बंद कर देगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहें अकाउंटेंट्स की जॉब्स पर डिक्लाइन आ जाएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर उन्हें करना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय डिक्लाइन इन द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, caused by decline in important industry। तो ये जो है दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ रीजंस भी लिख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट्स, और वो प्रोडक्ट ही बनना बंद हो जाए, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर डिक्लाइन आ जाए। जैसे कि हम जो बार फोन थे, बटनों वाले फोन थे, उनकी जगह स्मार्टफोन्स ने ले लिए। तो अब कंज्यूमर का टेस्ट अबाउट दैट बार फोन्स हैज चेंज्ड। तो अब जो उससे एसोसिएटेड लोग थे, जाहिर है दे आर नॉट डूइंग जॉब्स, या उन्होंने अपनी स्किल लेवल इंप्रूव किया या उनके पास जॉब्स नहीं है। या डिमांड फॉर पर्टिकुलर सर्विसेज डिक्लाइनिंग, जैसा कि मैंने अकाउंटेंट्स की मिसाल दी। और फिर
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है किसी जगह पे, तो उसकी वजह से भी सर्विसेज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है फॉर एग्जांपल, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डाउनफॉल आ रहा है, तो ये भी जो है ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ही कहलाएगी। एक और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये थोड़ी शॉर्ट टर्म होती है और इजी टू हैंडल भी है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि resulting from people losing jobs or the time period between finding another job, एक जॉब उनकी खत्म हुई है and they are trying to find out another job, उसका जो टाइम पीरियड बीच का है that is called frictional unemployment, resulting from workers leaving one job and finding another. So this is what we call frictional unemployment. The question is, what is the government policy towards every kind of unemployment? जो cyclical है, जब वो होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, और ये इसलिए पढ़ेंगे हम ताकि हमें पता चल सके कि उसके बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट्स क्या आएंगे। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू मैनेज द इकोनॉमी ताकि जो सब्सटेंशियल स्विंग्स आ रहे हैं बिजनेस साइकिल्स में वो कंट्रोल हो सकें और उसकी वजह से रिसेशन में जाने से इकोनॉमी बच जाए। Manage the swings in economy to avoid the recessions. इसमें अब मसला ये आएगा कि एक तरफ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कीप द इन्फ्लेशन लेवल लो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस रुक जाएगा, और अगर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन बहरहाल आई टोल्ड यू अर्लियर कि दिस इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट विल गो ऑन व्हेनेवर गवर्नमेंट ट्राइज टू मेक एनी पॉलिसी। Can try to control inflation or can try to bring economic growth. Government also tries to manage the competitive exchange rate ताकि इंपोर्ट्स बहुत महंगी ना हो जाएं, या अगर एक्सपोर्ट्स बिक रही हैं और सडनली उनकी प्राइस बढ़ गई किसी वजह से और वो बिकना बंद हो जाए तब भी रिसेशन आ जाएगी। So this is what government can try to do. In the case of structural unemployment, what government does? Government policy towards structural unemployment. The interesting thing about the structural unemployment government policy is that government might not try to prevent the economic changes that lead to the structural unemployment. Because if economic change is in favor, for example, the deindustrialization leading to the increase in the service sector, and the service sector is more productive proven in the future, so the government should not try, may not try to reduce the speed of the structural, to the pace of the structural unemployment. What government can do in this situation, government can try to alter the skills of the people. Government can provide education. Government can try to increase the skill set or can try to alter the skill set. So this is what government can do in the case of structural unemployment. In the case of frictional unemployment, however, the things are easy.
Government policy towards frictional unemployment. Government can improve the efficiency of the labor market so that people can find jobs easily, and government can try to provide the information to the people so that they can find out information where the jobs are available, can try to increase the efficiency of the labor market so that they can provide easily jobs to the people. Government can open job centers in some places that can also provide information to the people, and that can facilitate both employer and employee to group up with each other, and for the employer to provide the jobs to the employee, and for the employee to find out the jobs easy. What is the problem with the unemployment? The cost of unemployment that is lethal and sometimes that is problematic for the government and businesses. उस पे हम बात कर लेते हैं. The costs of unemployment. Okay. As a result of unemployment, first of all, the GDP of the country falls because the people who were producing goods and services are not producing goods and services right now. As a result of that, the gross domestic product of the country will fall. Secondly, the cost of sport to the unemployed will increase the cost of government, because the government will have to provide unemployment benefits to many people. As a result of that, they might face budget deficit. Higher unemployment also creates social problems. The crime rate increases in the economies where the unemployment rate is high. The family conflicts increases in the areas where unemployment rate is high. Unemployment also reduces the demand of goods and services. As a result of that, businesses may face losses. The aggregate demand of the economy will fall. Loss in income, loss in living standards. And finally, if there is a longer is the time period of unemployment, it's always difficult to get a job. It's not like whenever you bring your CV with 1 year gap on that, the employer will always ask you, what is the problem with you, where you have been, why are you not doing jobs? And there is another problem with that, the skills will become outdated. Let me give you an example from our teaching background. The teaching has entirely changed in last 2-3 years because of the COVID and because of this IT growth in this sector. If a teacher left the job in 2020, 19, 20, and he wants to join today in 2022, most of his skills related to the IT in teaching would have become outdated, and it will be really difficult for him to adjust these Zoom classes using these gadgets. I'm writing, the whiteboard is appearing in front of you. I'm recording these lessons, putting on the YouTubes and sending you the links so that people might follow after that. So there are lots of things that have been developed, and it will if the skills of the teacher have become outdated related to the IT, it will be really difficult for him to adjust in today's environment. There's also one of the problem that is attached with the unemployment. It becomes longer. So this was the introduction to the unemployment and its effects on the economy.